My name is Kevin. I'm from London, UK. I'm really happy to take my new voice. My problem started when I was 12 years old. This will definitely motivate people who are suffering from similar situations. I have high pitch voice problem. तो अभी तो सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वॉइस में काफी फर्क आ रहा है. Okay. I actually had this surgery in the back and you said I'll take it as a challenge and I'll give you your voice back without any invasive procedures. After surgery, I have vocal cord paralysis. And now I can speak normal. I feel good. Hi, I'm Cyrus. Hi, my name is Cyrus. Hi, I'm Chong. Now my voice has recovered and improved. इसलिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम, मैं पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ. My name is Shiraldin from Warnell. And I'm very happy that I'm speaking like a normal people with a bass voice like male. So I'm having this voice problem. I spoke with a few of my friends and they found reasonable changes in my voices. I've been facing difficulty in speech. You are able to speak words properly and sentences properly. Just you try to say something. Treatment the same day. After 2 hours I got my voice. Hello friends, welcome to our YouTube channel SLP Sanjay Kumar Voice Therapist, and today we are live after treatment with Harish, and we did earlier his pre-treatment live on 16th of August 2021. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SLP संजय कुमार वॉइस थेरेपिस्ट पे। और आज हम लोग ट्रीटमेंट के बाद लाइव हो रहे हैं। और हरीश को वॉइस की समस्या थी और हरीश इंडिया में नहीं रहते हैं, इंडिया से बाहर हैं। और इस वॉइस की समस्या की वजह से इन्होंने कांटेक्ट किया था हमें, और हमने इनका ट्रीटमेंट से पहले का लाइव किया था 16 अगस्त 2021 को। और आज हम लोग ट्रीटमेंट के बाद पुनः लाइव हो रहे हैं। तो आप लोग वो लाइव भी ज़रूर देखिए, और उसका हमने इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। तो हरीश, व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम यू हैड एंड व्हाई यू कॉन्टेक्टेड us, and how do you feel after treatment? What are the comments you are getting from your friends and the family member after this treatment? Okay, hi, my name is Harish, like mentioned before. So earlier I came for this treatment because I faced high pitch voice issues, and also high pitch voice issue basically. And as for my the reaction of my family members. So because I sound totally different compared to how I was before. So for my friends, they were very shocked at first, but they were happy for me because I sound better. So it's a better change for me. Okay, where you stay? And Okay, I am from Kuala Lumpur in Malaysia. And in fact, we have given all the session by online voice therapy. Yes. And that link we have given in the description of this live also. And I'll play your pre-treatment live. So people, those who are watching this live, they can watch that also. Okay. I'll be, I think there is some network issue. I'm just going to play that live. Okay. Hi, my name is Alicia. I'm written usually. I'm from KL, Malaysia. And so for the past 5 years, I have been going through some high pitch problem and voice breaks. So I thought of contacting Dr. Sanjay Kumar because I'm going for treatments and therapies before, but nothing happened.
Yes, I was just playing your pre-treatment live, and I will check some those who have joined. I want to say thank you. I can see here Som Sekhar is saying hello, sir. Hello, Som Sekhar, and Som Sekhar is saying stammering main region. Okay, it's interesting question. I'll discuss in the detail what is the reason of stammering and what we do in this speech therapy for the stammering. There is one question, and Pradeep Kumar is saying hello, sir. Hello, Pradeep. So जो लोग भी नया जुड़े हैं मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आज हम लोग ट्रीटमेंट के बाद हरीश नायर के साथ हैं, और हरीश नायर इंडिया में नहीं रहते हैं, ये मलेशिया में रहते हैं, कोलालमपुर। और आज हम लोग ट्रीटमेंट के बाद लाइव हो रहे हैं, और हमने इनका ट्रीटमेंट से पहले वाला लाइव किया था 16 अगस्त 2021 को। और एक क्वेश्चन आया है स्टैमरिंग के रीज़न के बारे में, तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि स्टैमरिंग का रीज़न क्या होता है और हम लोग स्टैमरिंग में क्या करते हैं। उसको समझने के से पहले, स्टैमरिंग को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल स्पीच प्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है। What is the normal speech production mechanism? For normal speech production, first thing is the thoughts that comes in the brain. Then we take air. That air goes to the lungs. When we breathe out, we put air pressure below the vocal cords. So here we have larynx. Inside the larynx, we have two string-like structures known as vocal cords. So once you put air pressure below the vocal cords start moving like the string of a violin and guitar, and sounds generate. Then we modify that sound into different sound with the help of our articulators like lips, tongue, jaw, teeth, palate. For example, if you want to say pa, both the lips are coming closer together and touching each other. When you want to say ta, tongue is coming between the teeth. When you want to say ka, back of the tongue is getting elevated and touching the soft palate. So each and every sound has its own place, own manner of articulation. So if place of articulation will be wrong, manner of articulation will be wrong, there will be pronunciation problem. And when we say a one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cords move, sound generate, we modify that sound into different sound. In one sentence, there are so many words. In each word, there are so many sound. Each sound has its own place, own manner of articulation. So it is little complex process. In this process, there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. And if coordination among these muscles goes, fluency goes. So I can say in a very simple way, the cause of stammering is something lagging the coordination among the speech production muscles with the brain. Here we don't have the doubt. It's universal. But if you go in little depth, we have seen so many different examples that I'll be sharing. So, and none of the one theory is completely correct. So we have seen certain genes also. There are certain genes which are responsible for the stammering. Like I have seen some patient, grandfather was having stammering, and then son was having stammering, grandson were having the stammering, both were having the twins. So what does it mean that? So there are certain genes which are responsible for the stammering. Even I have seen that the child was absolutely normal and his neighbor child was having a stammering, and he was trying to teach him and he developed the stammering. So stammering can be a learned behavior. I have seen that the person was completely normal and he had a head injury, and after that head injury he developed the stammering. So it may be neurogenic in origin. I have seen that child was absolutely normal, and he was very much emotionally attached with the grandmother, and when grandmother died, the child developed the stammering. So it can be psychological in nature. So if we can see that there are n number of examples which is related to the stammering, but here we don't have any confusion, like something lagging the coordination among the speech production muscles with the brain. So in the speech therapy, we try to coordinate all those muscles which are involved in the speech production, starting from the breathing muscles, laryngeal muscles, articulatory muscles, and all. And even I have seen that in like 2 to 5 years age, speech language development among children will be very, very fast, and they want to speak so many things, and they will be having limited vocabularies. So they will stuck at certain point of time, and this is called normal non-fluency. And the parents will be thinking the child is not speaking properly, so they will give negative comments. And due to their negative comments, also sometimes stammering develops. So, and what we do in the speech therapy, we try to coordinate all these muscles which are involved in the speech production. So it's just like a learning, cycling, driving, and swimming, something like that. And because we don't know exactly what is the reason, it's a very complex problem. So
but here we don't have any doubt. Something lagging the coordination among the speech production muscles with the brain. So based on this information, we design our therapy to coordinate the speech production muscles with the brain. So I am seeing some more questions. So I hope I have given the answer. What is the reason of the stammering and what we do in the speech therapy? And Pradeep Kumar is saying, hello, sir. Hello, Pradeep. Abhijit Barge is saying, hi, Abhijit. And Abhijit is saying, I have problem of high speech voice. So Abhijit, my suggestion is for you is please refer the description of this live. You will find our website and click on the website, reach me, and then you will find our contact details like email ID, contact number on the Google map, where is our clinic situated, all the details. So please call us. We'll do the perceptual evaluation. If needed, we will suggest certain tests and then we'll be able to comment on your problem. And अभिजीत बारगे सिंह, तो ये ठीक हो सकता है क्या? सो ऑलरेडी मैंने सजेस्ट किया है कि आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे, समझेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ टेस्ट के लिए रिकमेंड करेंगे, फिर हम कमेंट करेंगे कि हम आपको हेल्प कर पाएंगे कि नहीं, या ऑनलाइन हेल्प करेंगे या ऑफलाइन हेल्प करेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो इस लाइव जो वीडियो अभी चल रहा है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए तो हमारा वेबसाइट मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, रीच मी, फिर आपको हमारा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, गूगल मैप पे क्लिनिक कहाँ सिचुएटेड है, सारे डिटेल्स की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और तो थैंक यू जो लोग भी इस लाइव में जुड़े हैं, फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हाँ, कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बैंगलोर से बाहर था, तो लोग पूछते थे कि सर बैंगलोर आप कब पहुँच रहे हैं, तो मैं बता देना चाहूँगा कि मैं बैंगलोर आ गया हूँ और ये लाइव तो मैं अपने घर से कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्लिनिक भी जाना शुरू करूँगा कल से, तो मैं बैंगलोर में हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है। और जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स बॉक्स में हमारे कि सर लोग बोलते हैं XYZ प्रॉब्लम है मुझे, सर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना होगा, ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या होगा। तो फिर से इसका आंसर यही है कि पहले हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे, समझेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ टेस्ट के लिए रिकमेंड करेंगे, उन सारी चीज़ों की कंबाइंड इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम कमेंट कर पाएंगे। हाँ, लेकिन सारे प्रॉब्लम के लिए, सारे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के लिए हम लोग टेस्ट के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। जो सबसे कॉमन टेस्ट है मैं रिकमेंड करता हूँ स्ट्रोबोस्कोपी, तो लेकिन कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में मैं रिकमेंड करता हूँ। तो आप हमें कॉल कीजिए और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे, और हमारा वेबसाइट का लिंक इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू जो लोग भी जुड़े हैं, और उनको बता देना चाहूँगा कि आज हम लोग ट्रीटमेंट के बाद हरीश नायर के साथ जुड़े हैं। और हरीश नायर को वॉइस की समस्या थी। हरीश नायर कोलालमपुर मलेशिया से हैं, और इनका हमने ट्रीटमेंट से पहले भी लाइव किया था, जिसका प्री ट्रीटमेंट लाइव का जो लिंक है वो हमने इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग पूरा वो लाइव देख सकते हैं, और उसमें मैंने काफ़ी कुछ जानकारी भी दी है। So those who are joined newly, the information is we are with Harish Nair, and Harish Nair is not in India, he is in Malaysia, Kuala Lumpur, and he was having some voice problem, and we did his pre-treatment live on the 16th August 2021, and today we are post-treatment live. And the live which we did on 16th August, that description, that link we have given in the description of this live, so please refer that, and you can watch in detail how his voice was before treatment. So Harish Nair, again, please tell us what exactly problem you had, why you contacted us, and what are the comments you are getting from your friends when you are calling now. Okay, hi, my name is Harish Nair. So initially I had high-pitched voice problem, which, it was hard for me to speak loud and then speak in a lower tone to sound like a boy. So I approached this therapy treatment, and I managed to gain confidence, higher confidence in speaking. So not only the pitch comes in, also the confidence. So it's both in one. And after getting this treatment, doctor advised me to call my friends. So their reaction was like, their reaction initially, they were very shocked because I sound very different from before. But it's a good change. It's not a bad change. It's a good change. So they are happy for me. Yeah. So even I want to thank you. You have shown faith on online voice therapy, and because of your faith, we are at this stage. And
Even there was a very good sentence in your speech, like we change the voice, but the confidence is the byproduct. So I have seen my all patients. Once we correct the voice problem, they will automatically gain the lot of confidence. So that is a kind of byproduct of correcting the voice problem. And, yes, thank you, sir. And so there are some people, those who have joined. Again, I want to say thanks for joining us and watching us. Som Sekhar, thank you for joining us and watching us. And Pradeep Kumar, thank you for joining us and watching us. Abhijit Barge, thank you for joining us and watching us. And thank you all for joining us and watching us. And apart from correcting the pitch and loudness problem, at our center, we also provide treatment for other communication disorder. So if you want to know all the details, please refer the playlist of our YouTube channel. So in the YouTube channel playlist, once you explore, you'll find different playlists and of different communication disorder, and all the playlists will be having pre and post treatment videos also. Like playlist you will find like Puberphonia, high pitch voice, stammering, vocal cord paralysis, misarticulation, aphasia which happen after the stroke, spasmodic dysphonia, phonatory gap, functional aphonia, functional dysphonia. And so once you'll explore our YouTube channel playlist, you will find the kind of services we provide. And even because I'm an audiologist and speech language pathologist both. So once we do hearing testing, and if the patient need the hearing aid machine, and once we fitted the hearing aid, how the patient communication improved, so that kind of video also you will be able to find it at our YouTube channel. And whenever you're taking voice therapy or any speech therapy, you should take help from the professionals. Nowadays in the social media, there are so many healthcare quacks without the valid degree or without the valid training. They are writing with their name voice therapist, speech language pathologist. So sometimes taking treatment from such healthcare quacks may damage your voice and the vocal cords. So how do you know that who is the right professional or who is a healthcare quacks? So whenever you are going to take the speech therapy, so first try to find out your therapist, from which college he has studied, what degree he is having, and in which year he has got the degree in speech and hearing science, graduation or post-graduation. And if he is in India, if he is registered in the Rehabilitation Council of India or not, or if he has registered, what is the registration number? And if he's telling I have XYZ clinic, so just check in the Google map that clinic exists or not. So just try to explore in the detail, then you can reach the truth. So जो लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के बारे में और साथ में स्पीच थेरेपी और स्पीच थेरेपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि बहुत सारे झोला छाप हेल्थ केयर क्वैक्स किस्म के लोग भी अपने नाम में स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, वॉइस थेरेपिस्ट लगा देते हैं, और इनोसेंट लोग को समझ में नहीं आता है कि कौन है असली और कौन है नकली। तो असली लोगों को पहचानने का जो तरीका है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके स्पीच थेरेपिस्ट के पास क्या डिग्री है, कौन से कॉलेज से उन्होंने वो डिग्री प्राप्त की है, और वो उनका जो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन वो अपने सोशल मीडिया पेज पे या वेबसाइट पे दिए हैं कि नहीं है। और अगर जो झोला छाप किस्म के लोग होंगे वो इन सारी चीज़ों को देने से हिचकेंगे, इन्फॉर्मेशन जस्ट लिख देंगे स्पीच थेरेपिस्ट, और कुछ XYZ डिग्री भी लिख सकते हैं कभी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कौन से कॉलेज से डिग्री हासिल की, कौन से ईयर से में उन्होंने डिग्री हासिल की। कभी क्लिनिक का भी नाम कुछ XYZ लिख देंगे, लेकिन गूगल मैप पे वो क्लिनिक कहाँ पे सिचुएटेड है ये नहीं बताएंगे। तो इस तरह से जो है आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन असली है और कौन नकली है स्पीच थेरेपिस्ट। और ऑफ कोर्स सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनके पास डिग्री क्या है, कौन से कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है, कौन से ईयर में प्राप्त की है। तो इन चीज़ों के पीछे पड़ेंगे तो अगर नकली होंगे तो वो बताएंगे नहीं अपने सोशल मीडिया पेज पे। और ऐसे अगर नकली लोगों के बारे में आपको भी जानकारी मिलती है और आपको अगर नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी रूप में, तो आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर सकते हैं उनके बारे में। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेंगी उनके खिलाफ। और तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है अवेयरनेस क्रिएट करूं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के बारे में और इसके अवेलेबल ट्रीटमेंट के बारे में अपने लाइव के माध्यम से। और एक क्वेश्चन है शिवम पार्थी का, शिवम पार्थी लिख रहे हैं
please answer my question, but I'm not able to understand what question is you have. So anyway. So जो लोग इस लाइव में जुड़े हैं, फिर से मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आज हम लोग ट्रीटमेंट के बाद हम लोग लाइव हो रहे हैं हरीश नायर के साथ। और हरीश नायर जो हैं वो इंडिया में नहीं है, ये कुलालमपुर मलेशिया में रहते हैं। और इनका हमने ट्रीटमेंट से पहले का लाइव किया था 16 अगस्त 2021 को, और आज हम लोग ट्रीटमेंट के बाद लाइव हो रहे हैं। और इनका ट्रीटमेंट के पहले वाला लाइव का भी जो लिंक है इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर डिटेल में देखिए। उसमें बहुत सारे हमने इन्फॉर्मेशन भी दिए हैं जो शायद हेल्पफुल हो कई लोगों को। So those who are watching this live information is today we are after treatment live, and today with us Harish Nair is here. Harish Nair was having high pitch voice, feminine voice, and we did his pre-treatment live on 16th August 2021, and today on 22nd November 2021 post treatment live we are. And and I have also given the link of the pre-treatment live in the description of this present live. And so Harish Nair, what exactly problem you had and how do you feel after treatment? What are the reactions you're getting? What are the challenges you're facing before treatment? Please tell us again. Okay, hi. So I will start again. So like I've mentioned earlier, I've had high pitch voice problem. So the problems I faced from this high pitch voice problem would be I couldn't speak loudly. I couldn't sometimes I couldn't sound like a boy. And so sometimes there's the identification problem. So so after I joined this treatment, not only in terms of pitch, but I've increased my confidence in speaking because I'm currently a student. So as a student, you will need to present a lot. You will need to mix with other people a lot. So earlier I couldn't do that because people can't hear me that clearly and all. So now it's better. The confidence is gaining more, and with the confidence going up, your voice will get better as well. So that's what I feel. And so as for reactions, I've contacted my friends, the old friends. So initially they were shocked, and because it's a big change from totally different voice ranges, but they are happy with the change. For me, they're happy for me. I sound better, so they're happy for me. Okay, great. So I'm getting some questions, and there is one question asking, like Farooq Ahmad has mentioned, hello sir, you are the magician. I have benefited from you. Please make some videos about exercise for maintaining good voice. Thanks Farooq for suggestion. And why sometimes I don't prefer to make those therapy technique videos. Sometimes healthcare quacks will start using the technique without proper use of those. Means just knowing the particular technique is not important. How you are doing, and it should be done under the supervision of some professional. Because wrong way of doing vocal exercise may damage your voice and vocal cords. So that's why I don't prefer to do that. But anyway, it's a good suggestion, and I will think what else I can teach to the people so that at least it will not harm. I will just explore those techniques. But therapy technique, if I'll be explaining in my live or any video, so people will start the self-treatment. So any wrong vocal exercise or wrong way of doing vocal exercise may damage the voice and the vocal cords. So we do acoustic analysis. We suggest sometime if it is needed stroboscopy. So based on that, all findings, we decide what technique we should use, and based on perceptual evaluation as well. So just all those techniques is not equally useful for all people. So it should be specific for some patient. What problem they are having, depending upon that, those exercise should be designed. And Vishal Thakur is saying, why you not preferred Karate? It's a very interesting question.
So taking guarantee is against the code of ethics of our profession. So any profession has certain code of ethics. So in our profession also, we can't take the guarantee based on the code of ethics. And even we sometimes we don't know how the patient's body is going to respond on our therapy technique. So without trial, how we can know that? And in fact, any profession, if you are taking help of any lawyer, in the beginning only he can't take guarantee you are going to win the case. If you are in the flight, the pilot will not take the guarantee. If you are going from Bangalore to Delhi, you will be reached safely. If it is completely 100% guarantee, then why the insurance is required? Even if you are going to the hospital, if any surgeon is going to do a big surgery, they will take sign also before the surgery. So any profession has, of course, we are expert in communication disorder. Based on that, our evaluation, we can give certain feedback, okay, expected outcome, but taking guarantee is against the code of ethics. So we don't do that. Okay, hope, I think Vishal Thakur got idea. So any profession has certain code of ethics. So we work depending upon that. And we counsel the patient also based on our guidelines. Of course, healthcare quacks, jhola chap kind of people will take guarantee. So जो लोग झोला छाप किस्म के होंगे, जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, उनको कोड ऑफ एथिक्स का पता नहीं होगा, वो लोग गारंटी लेंगे. लेकिन जो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होंगे, जिन्होंने पढ़ाई की है इस फील्ड में, तो उनको अपने कोड ऑफ एथिक्स की जानकारी है, तो उसके आधार पे वो लोग जो है पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं. तो और जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहूँगा कि मेरा नाम संजय कुमार है. SLP संजय कुमार कर सकते हैं. SLP का मतलब है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. ऑफकोर्स मैं ऑडियोलॉजिस्ट भी हूँ, लेकिन मैंने मास्टर ऑफ साइंस इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया. SLP लिखना पसंद ज़्यादा करता हूँ. तो मेरा नाम है संजय कुमार और बाय प्रोफेशन में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट हूँ. मैंने अपनी पढ़ाई की है AIIMS दिल्ली से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से किया है. इस तरह के वीडियोस देखिए, और भी अगर कोई यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो दिखता है तो इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कितने लोग बोलते हैं कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है. और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जो है से, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से मैंने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फील्ड में. तो ये रहा मेरे बारे में थोड़ी जानकारी. और जब भी आप स्पीच थेरेपी लेते हैं, सपोज कीजिए आप पिच के लिए स्पीच थेरेपी ले रहे हैं, वॉइस थेरेपी ले रहे हैं, और XYZ स्पीच थेरेपिस्ट के पास, एक्स स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए और फ़ायदा नहीं हुआ, तो इमीडिएटली ये मत सोचिए कि आप वॉइस थेरेपी के लिए या स्पीच थेरेपी के लिए राइट कैंडिडेट नहीं है और आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए. हो सकता है आप जिस प्रोफेशनल के पास गए थे, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट के पास, उनकी एक्सपर्टीज किसी दूसरे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में रही हो. तो जब आप वॉइस थेरेपी ट्राई करते हैं एक एक्सपर्ट से जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और उनसे भी जब फ़ायदा नहीं होता है, तभी आपको सोचनी चाहिए कि सर्जरी. क्योंकि आज ही मैं एक ऐसे पेशेंट से मिला था, इंटरनेशनल पेशेंट है, इंडिया से बाहर है, कि उनके रिलेटिव ने सर्जरी करवाई पिच एंड लाउडनेस करेक्शन में, और उसके बाद वॉइस और भी ख़राब हो गई. तो उसको ये कहानी पता था, तो उसने पहले से डिसाइड किया मुझे जो हो जाए वॉइस थेरेपी ही लेनी चाहिए. तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सर्जरी नहीं करानी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले वॉइस थेरेपी ट्राई कीजिए. और वॉइस थेरेपी एक्सपर्ट्स है जिनको इस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है. किसी एक से ट्राई किया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो एकदम से ये मत सोच लीजिए, हताश मत हो जाइए, निराशावादी मत बन जाइए, अब तो मैं वॉइस थेरेपी का कैंडिडेट ही नहीं. एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए आपको. और एक क्वेश्चन आया है, MS भगवान स्टेटस. हेलो सर, मेरी आवाज़ भी लड़कियों जैसी आती है. तो आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपकी एज क्या है. तो अगर आपकी उम्र जो है 10-12 साल से नीचे है तो घबराने की बात नहीं है. प्यूबर्टी के बाद मोटी होने की संभावना है. अगर उसके बाद भी मोटी नहीं होती है तो आप हमें कॉल कीजिए, आपकी वॉइस को हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, फिर अकॉर्डिंगली गाइड कर पाएंगे. और आपकी एज प्यूबर्टी से आगे चली गई है तो ऑफ कोर्स वॉइस थेरेपी से आपको फ़ायदा मिलेगा. तो थैंक यू जो लोग इस लाइव में जुड़े हैं. मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि हमारे बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी जब आप हमारे काम को देखेंगे. और हमारे काम को देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए. जब हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो डिफरेंट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के वीडियोज़ मिलेंगे, प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट आपको वीडियो मिलेंगे. वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट वीडियोज़ आपको मिलेंगे. स्टैमरिंग के आपको मिलेंगे. फंक्शनल एफोनिया के आपको मिलेंगे. हाई पिच वॉइस प्यूबरफोनिया के, स्पास्मोडिक डिस्फोनिया के, फोनेटरी गैप के, सल्कस वोकलिस के,
जो स्ट्रोक के बाद एफेजिया हो जाती है उसके वीडियोस मिलेंगे। तो इससे आपको एक पता चलेगा कि एक सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं लोगों को ज़िंदगी को कैसे बदलते हैं उनके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके। सो दोस्त हु आर वाचिंग दिस लाइव, द इंफॉर्मेशन इज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी प्रोवाइड एंड हाउ वी changes the life of people having communication disorder, please explore our YouTube channel's playlist and you will find different communication disorder playlists. Like you will find the playlist for the vocal cord paralysis, you will find playlists for the stammering, you will find playlists for the aphasia, you will find playlists for the misarticulation, stammering, spasmodic dysphonia, functional aphonia, functional dysphonia, sulcus vocalis. So please explore our YouTube channel to understand how we provide our services online, offline, and what are the communication disorders. और फिर मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन है तो उस पर भी मैं चर्चा जारी रखूँगा। और MS भगवान लिखते हैं मेरी उम्र 22 है। सो आई थिंक यस, प्लीज कॉल अस एंड विल डू द परसेप्चुअल एवोल्यूशन एंड देन विल गाइड यू एंड आई होप द वॉइस थेरेपी शुड हेल्प for you. And Farooq Ahmad is saying, sir, I mean exercise videos for those who have taken speech therapy from you. In fact, your therapy is wonderful. I can't be expressed in words. Thank Farooq Ahmad. Thank you so much. And feel free to contact us if any question you have. You have our email ID and contact number. So thank you so much. And for your faith. So those who have joined and watching this live, I want to say thank you. Thank you, Som Sekhar. Thank you, Pradeep Kumar. Thank you, Abhijit Barge, for joining and watching us. Thank you, Shivam Pruthi. And thank you, Bisal Thakur. Thank you, MS Bhagwan Status. Thank you, Farooq Ahmad. Thank you all. Love you all. And I had a plan for this live 30 minutes. I think we are completing 30 minutes. We'll stop. And if you have any question, please write in the comment box and we'll try to give answer in the next live. Thank you all. Thank you so much, Harish, for helping me to create awareness about the communication disorder by coming live. In fact, you are in Kuala Lumpur, Malaysia, and I'm in India, and you have shown faith on me. Thank you so much. Okay, thank you so much, sir. Okay, we'll stop this live and I'm opening